Good morning, students. Yes, yesterday we missed our one session, but tomorrow we'll take a session of accounting for internal reconstruction and branch accounts. One day we will prepone it, okay? And we'll try to cover your syllabus till 8th of February. So you can start your revisions from 9th, next Saturday, okay? So let's start. Internal reconstruction, how many ways are there? So we'll quickly revise this. There are 5 ways. Number 1 is paid up capital, you have to alter that. Okay, alteration. Second one is compromise. Third one is your reduction in the share capital. Okay, then you have surrender of shares. So there are total 5 ways. Okay, and I missed any way? Yes, any one of you? So we open which account? Variation of shareholders right. Yes, I missed one. Variation of shareholders right. So we do not have any entry for that. So we completed at least 2 to 3 illustrations in the last session, and today we are going to start with homework part. So homework में क्या क्या दिया था, चलो जल्दी से रिवाइज कीजिए. Which question was there in homework? जल्दी से मुझे बताइए. 6, 7, 8. So let's start. 6, 7, 8. Six question. Fifth we have completed. No. So 5, 6, 7, 8. Chalo. Okay, which one was difficult? Yes, any difficult question? So first we'll start with 7th number. So first we'll start with 7th number. Okay. Or should I give some time for other students? Okay, I will give some time because many students are joining. So we'll start with some simple question first. So I will start with 6th first, and then we will move to 7th question. Okay. So 7th question after this. So who is going to read? Other students? Vaidai? Very good, beta. Yes, beta, Vaidai. Start. Good morning, sir. Good morning. Chalo, start. The following scheme of reconstruction was finalized. Sixth one, Preference sixth share. one, sixth one, sixth one. Following is the balance sheet of ABC Limited as of 31st March 2021. Okay, balance sheet is okay. Debit balance, what we are going to write over there? P&L. Debit balance of P&L, what should I write over there? I write hidden adjustment, no, in P&L. Yes, sir. Yes, sir. You forgot or what? No, sir. Hidden adjustment. Yes. Next. There is no interest on debentures. That's Following it, sir. scheme of reconstruction. The following scheme of reconstruction was finalized. Preference shareholders would give up 30% of their capital in exchange for allotment of 11% debentures to them. So what is So, the amount of preference shares? 6 lakh is the amount of preference shares. So 30% is 1,80,000. So preference share capital account debit 6 lakh to capital reduction 1,80,000 to 11% debentures 4,20,000. 4 lakh? 20,000. Okay. So preference share capital account debit. What is the percentage of preference share capital?
8%. 8% 8% preference share capital account debit to to capital 11% reduction to 11% debentures. 11% debentures. Very good, beta. I will show you the answer also. Amalgamation was easy or this chapter is very easy? Compared to amalgamation, this is easy. Amalgamation is easy. Compared to Acha. amalgamation, this is easy. This chapter is very simple. Okay. Yes, sir. Very good, beta. So you can pass 2 entries if you want, or you can pass single entry also. Yes, sir. So if I am giving exam beta, I will write only single entry. What you passed. So institute I think have written preference shareholder. No. Yes, sir. No, sir. No, then why I opened this? It's only one entry I am going to pass. 8% account debit to directly 11% debentures. No need to pass fifth entry of internal reconstruction. No need to pass Second entry. second entry. Yes. Next. Debenture holders. Debenture holder having charge on plant and machinery would accept plant and machinery in full settlement of their dues. So debenture holders, 9% debentures holder account debit, 12 lakh to plant and machinery account, 9 lakh, and to capital reduction, 3 lakh. 9% debentures 12 lakhs To plant and to machinery, 9 lakh, plant and machinery 9 lakhs, 9 lakhs. then to capital reduction, 3 lakhs. Okay. Yes. Correct? Yes, sir. 9% debentures to plant and machinery to capital reduction. Yes, sir. Yes. Two adjustments over. Inventory equal to rupees 5 lakh in book value will be taken over by trade payables in full settlement of their dues. So trade payables account debit. Trade payable account debit, trade payable 5,92,000. 5,92,000 to inventory 5 lakh to capital reduction 92,000. Very good, beta. Yes. Next, trade payable to inventory to capital reduction. Yes, sir. If you are finding any entry difficult, other students, you can ask me logic. Investment value to be reduced to market price. Investment value to be reduced to market price. Yes, sir. So you want to reduce asset. Capital reduction account debit to investment account. Okay. So tell me logic also, beta, now. Yes, sir. So investment is asset. We want to reduce it. Asset shows debit balance. So we want to reduce it. We will give credit and capital reduction account will be debited. 13,000. Yes. Next, 13,000. Next entry. The company would issue 11% debenture for rupees 3 lakh and augment its working capital requirement after settlement of bank overdraft. So the company is issuing 11% to satisfy both the needs of bank overdraft as well as working capital requirement. So bank overdraft has a credit balance. So now we have to debit it, and we are issuing debentures No, to them. no, beta. Then entry will be first we will issue debentures. So debentures issue entry will be bank account debit. Yes, sir. Bank account debit to 11% debentures. 11% debentures. So 11% debentures is our new liability. So bank account debit to 11% debentures, and then we will pay bank loan. Yes, sir. So bank OD account debit to bank. What is bank OD? 1,50,000. 1,50,000. So 1,50,000 is a bank OD and to bank. So liability we have to cancel. So give debit and to bank balance reduces. So to bank. Now hidden entry, though it is not given. Capital reduction account debit to P&L. Correct? P&L is showing debit balance. Yes, sir. So 4,05,000 we will give debit to
Capital capital reduction. reduction and credit. Two. P&L we are going to cancel. Yes, So sir. huge loss will get over. Therefore, P&L is zero and therefore credited and capital reduction account will be debited. Okay. So now on Calci, you tell me. First take Calci pay. Yes, how much you will take? 1,80,000. 180. Hmm. Then 300 add or less Add plus 300 300. and 92 add 92 minus add. minus Okay. 13 Now capital reduction debit. So minus 13. minus 405 Minus 205 405. And you 154 left with? 154 And where to transfer it? capital reserve. Okay. So capital reduction to capital reserve 154. Yes, Chalo. sir. Now tell me Balance accounting. Balance sheet. Huh? Now one by one. 8% equity preference share capital. Debit is to or be credit? debited, so we have to reduce it. Yes. Minus 6 6 lakhs. lakh. Next. Next, 11% 11% debentures. debenture to be added. In which account? Long-term borrowings. Okay. Then, uh, Wait. 4 lakh 20,000. I'm writing it. Ah, 4 lakh 20,000. Next. next, 9% 9% debentures. debentures to be cancelled by 12 lakh. So debentures is debit. So debit means cancel it. 12 lakhs. To plant and Next, machinery. plant and machinery. 9 lakh. 9 lakhs. Then, trade payable is to be reduced by 5 lakh 92,000. Then, inventory is to Inventory. be reduced by 5 lakh. Next, investment is to be reduced by 13,000. 13,000 investment reduced. Then, bank is to be added by 3 lakh. Bank, I will add cash and cash equivalent 3 lakhs. Then, 11% debenture is to be added by 3 lakh. 11% debentures add by 3 lakhs in 4 lakh 20,000. Okay. Then, bank overdraft is to be reduced by 1 lakh 50,000. Bank OD is also reduced by 1 lakh 50,000 and bank balance reduces by 1 lakh 50,000. Correct? Yes, sir. Yes, sir. And new Next, item you will write in the capital reserve in capital reserves and reserve 1 lakh surplus. 53,000. And this is zero. Correct? Yes, sir. Now total I will take it on the credit side. So share capital total is 20 lakh. 20 lakhs. Reserve surplus 1 lakh 54,000. 1 lakh 54,000. Wait. Then your 9% debenture 0. 11% debenture 7 lakh 7 lakh 20,000. 20,000. So 7 lakh 20,000 I will write it in the long term borrowings. Yes, sir. Correct? Yes, sir. Plant and machinery 0. Furniture 3 lakh 20,000. So this is 3 lakh 20,000. And non-current investment 5,000. 55,000. Correct? Yes, sir. Trade payable 0. Short Short term borrowing term 0. 0. So, and here in asset side inventory 9 lakhs, 14 lakh 39,000, 10 plus 300 minus 150, 160. 1 lakh 60,000. 160 plus 1439 plus 900 plus 55 plus 320. So I'm getting the answer 28 lakh 74,000. 74,000 And also minus liability 20 2,000 lakh. minus 154.
Same. Yes, sir. 28,74,000. Matching with ICAI answer? Is it Yes, sir. difficult? Easy, sir. Have you completed homework? Yes, sir. Fair? Not fair, sir. Rough. No, no. Remaining question 4 and 5 4, 5 completed, sir. completed. Very good. So you finished this question in 17 minutes. Not 17 actually. We did revision also. So you completed it in 12 to 13 minutes only. Yes, sir. Easy chapter. Yes, sir. 7 number you solved it or not? Yes, sir. I solved it, but I didn't get it. No problem. So everyone, now should we start with 7th one? Okay. Yes, Vaidhi, thank you. Thank you, sir. Any difficulty, beta? Any difficulty? Chalo. Sarthak, raise your hand, beta. Next question you will read. Okay, Dinesh Kumar. अच्छा सार्थक रेज ठीक है सार्थक बोलिए चलो Good morning, sir. गुड मॉर्निंग स्टार्ट 7 number balance sheet is okay. Yes, sir. It was decided to reconstruct the company. First adjustment, each share is subdivided Substitution. into 10 fully paid equity shares. So this is reduction or alteration. सार्थक ये रिडक्शन है क्या ऑल्ट्रेशन है? Alteration. वेरी गुड. ये रिडक्शन नहीं है. आप इतना स्लो क्यों बोल रहे हो बेटा? नहीं स्लो सर, रेंज का प्रॉब्लम है इधर. बारिश. बारिश हो रही है किधर? नहीं नहीं, मौसम वही हो रहा है. कौन से स्टेट में हो आप? महाराष्ट्र में ही हूँ. वो सुबह से. Okay. Alteration. So how many shares are there? I think Sarthak 10 has लाख. range problem. सार्थक को रेंज प्रॉब्लम है थोड़ा सा. दिनेश कुमार. Yes, sir. Good morning, sir. हाँ सार्थक यू कैन हेल्प हिम. चलो आई थिंक यू हैव रेंज इशू. 10,000 equity shares of 100 each. So now you will convert it into 10 fully paid equity shares, sir. so 10,000 into 100 converted into 10. So 1 lakh into 10 correct है? Yes, sir. Yes or no? Yes, sir. Yes. So entry will be Equity share capital account debit to equity share capital. equity share capital account debit to face value 100 to Yes, sir. equity Face share value. capital face value 10. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Yes. After subdivision, each shareholder shall surrender to the company 50% of their holdings. Yes, sir. Or the purpose is not important. They are surrendering the share. So what is the entry for surrender? So capital we want to reduce. So capital has which balance?
Capital as credit balance. So you will give Debit balance. debit. So capital Share capital account Equity share debit to capital means capital account account one. debit share to surrender, share surrender account. share surrender account. Very good. 5 lakhs. Easy. Yes, sir. So second entry you can see over here. Equity share capital account debit to share surrender. Share surrender account. Next. Out of share surrender, Yes, sir. 10,000 10,000 shares of of rupees rupees. 10 each Hmm. shall be converted into 12% preference shares of rupees 10 each, fully paid up. Hmm. Sir, they are saying that in the share in the surrendered shares, 10,000 shares shall be converted into 12% preference shares. Therefore, we are converting equity shares to preference shares. Hmm. Hmm. So it's equity share account debit to preference share account, 12% preference share account. No. And what about share surrender? 5 lakh. Okay, sir. Yes, sir. They have said that surrendered shares were transferred, right, sir? Share surrender account debit to Yes, sir. 12% preference share capital. Preference share capital. Okay, sir. Okay. Okay, So sir. Yes. entry will be share surrender account debit Debit to 12% to preference. preference share capital. Yes, sir. So out of 5 lakhs, no? Yes, sir. 5 lakhs. 1 lakh you converted into preference share capital. So entry will be share surrender. You will reduce it to preference share capital. Got the entry? Yes, sir. Yes. You can see over here. So how much balance is left in share surrender account now? 4 lakhs, sir. 4,000, 40,000 shares into 10 each. Yes. The claims of the debenture holders shall be reduced by 75% in consideration of the reduction. Debenture holders shall receive preference shares of rupees 1 lakh, which are converted out of shares surrendered. IMP. What is the claim of debenture holder? Sorry, So sir. you will write hidden over here. Okay, sir. Debentures claim is 2 lakh plus 24,000. Yes, sir. With the percentage. 2 lakh 24,000. Yes, sir. Debenture holder shall be reduced by 75%. So 2 lakh 24,000 into 75%. 1 lakh 75,000 reduced. And Yes, sir. 25% you continued. In Yes. consideration of the reduction, you already issued 1 lakh rupees ka preference shares. Yes, sir. You already converted. So don't pass entry for issue of preference share capital. Reason already passed. Only you will write on names of debenture holder on Yes, that sir. share certificate. Okay, You're sir. getting my point, Dinesh? Yes, sir. So you will pass entry only for reduction of 75%. Okay, sir. So 12% debentures account debit. Yes, sir. 12% debenture account debit to interest account. Sorry. Sorry. Accrued interest 12%. account debit Yes, sir. 18,000 to To, capital reduction 1 lakh yes, sir. 68,000. 1 lakh 68,000. 1 lakh 68,000 Yes, sir. 68,000. 1 lakh 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 68,000. 1
Do not Yes, sir. pass entry for preference share capital again. Yes, sir. If you write entry for preference share capital, because company is not issuing it, company is converting it in share surrender, and from share surrender you are giving it to debenture holders. So Yes, whether sir. company is giving these shares or this is converted out of share surrender. This is converted out of share surrender, sir. देखो बेटा, समझ लो हिंदी वाले, शेयर सरेंडर हमने करके ऑलरेडी प्रेफरेंस शेयर, देखो आपने शेयर सरेंडर तो किया 5 लाख, एंड 5 लाख में से आपने 1 लाख रुपया ऑलरेडी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इशू कर दिया है। भाई बच्चे को क्या लगता है कि 12% को हम लोग नए प्रेफरेंस शेयर्स दे रहे हैं? ना मुन्ना, आप 12% को नए शेयर्स नहीं दे रहे हो डिवेंचर्स वालों को, आपने ऑलरेडी प्रेफरेंस शेयर्स इशू कर दिए हैं, हमारे जेब से नहीं, जो शेयर सरेंडर किए थे उनमें से, कंपनी के जेब से नहीं जा रहा है, इक्विटी शेयर होल्डर से ले रहे और उनको कन्वर्ट कर दे रहे प्रेफरेंस शेयर्स में, और वो प्रेफरेंस शेयर्स किसको दे दिए? नाम लिख दिया डिबेंचर होल्डर का, शेयर किसी और के, दिया प्रेफरेंस शेयर्स और नाम लिखा डिबेंचर होल्डर का। कंपनी को कोई फायदा नहीं है, एक हाथ से इक्विटी शेयर होल्डर से पैसा कटाया उनका और वो दे दिया डिबेंचर होल्डर्स को, और डिवेंचर होल्डर वाले बोल दिए हमें कुछ नहीं चाहिए, बस 75% रिड्यूस कर दिया, ये प्रेफरेंस शेयर्स हमें दे दो, और 25% हम हमारे कंपनी के डिवेंचर्स कंटिन्यूएशन में रखेंगे। 25% का क्या, वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विद दैट 25%। रिमेंबर, 75% we reduced, and what we issued? Preference shares. Whether we issued preference shares from our pocket, no, we already converted. Only we will write name of debenture holder on that certificate, so no need to pass extra entry for preference shares, otherwise you will credit it 2 times. So very very important. Any difficulty? तांबेश्वरी, एनी डिफिकल्टी बेटा? नहीं सर, अभी क्लियर हो गया सर। मुझे इंटरेस्ट वाला के अंदर बहुत प्रॉब्लम हो रही थी अभी सर। इजी? हाँ सर, अभी इजी हो गया सर कि ऐसा क्यों होता है कि प्रेफरेंस शेयर नहीं लिया और ये सब क्या हो रहा है, नहीं समझ आया था सर पहले। तन्नू जी को डिफिकल्टी है, बोलिए तन्नू जी। सर एक बार फिर से बता दीजिए, समझ नहीं आया। देखो बेटा, डिबेंचर होल्डर्स ने अपना क्लेम कितने से छोड़ दिया? सर डेवेंचर होल्डर ने 2,74,000। 75%, 75% से उन्होंने अपना अमाउंट छोड़ दिया, बराबर है? तो डिबेंचर्स यस सर। एक्रूड इंटरेस्ट टू कैपिटल रिडक्शन, इसमें कोई दिक्कत है क्या समझने में? सर उसमें ट्रेड सुनो ना, पेबल्स मैं को भी क्यों लिया है हमने? रुको ना बेटा, अभी डिबेंचर होल्डर्स ट्रेड पेबल कहाँ जा रहे हैं हम लोग? अभी हम लोग डिबेंचर ओके होल्डर्स पे हैं। ओके सर। ट्रेड पेबल अभी तक एक्सप्लेन ही नहीं किया है, आप क्यों भाग रहे हो उधर? ओके सर। यही तो बात होती है ना बेटा, जब मैं एक्सप्लेन करता हूं आपके दिमाग में आगे क्या, ये हम लोग सोचते हैं, अभी फोकस उसी पे करो जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। ओके सर, सॉरी सर। ठीक है, कोई बात नहीं। डिबेंचर्स का समझा क्या? यस सर। डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन, यस सर, वो समझ गई। और उसके बदले में हमने उनको क्या दिया? प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस सर। प्रेफरेंशियस दिए। अब ये प्रेफरेंशियस हमने ऑलरेडी हमारे जेब से दिए थे या शेयर सरेंडर में से दिए? शेयर सर सरेंडर। शेयर सरेंडर में। शेयर सरेंडर। तांबेश्वरी रुको 1 मिनट बेटा, तो शेयर सरेंडर में से दिए, तो मुझे एक बात बताइए इजी वे में, कि हमने ऑलरेडी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की एंट्री कर दी है, वापस से प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की एंट्री करेंगे तो 2 बार प्रेफरेंस शेयर कैपिटल होगा ना, यस सर। और शेयर सरेंडर में से कन्वर्ट करके सिर्फ प्रेफरेंस शेयर्स के नाम नहीं लिखे थे, प्रेफरेंस शेयर्स में कन्वर्ट कर दिए थे, सिर्फ वो प्रेफरेंस शेयर यस सर, सर्टिफिकेट पे किसका नाम लिखेंगे अभी? डेवेंचर होल्डर्स का। बस बेटा वही है, तो 2 बार प्रेफरेंस शेयर्स की एंट्री नहीं करनी है। ओके सर।
इजी? यस सर। हाँ, चलो अभी नेक्स्ट, अभी रुको, अभी ट्रेड पेएबल पे आए। ओके सर। यहां पे क्या लिखा था? इन कंसिडरेशन ऑफ रिडक्शन। इन कंसिडरेशन ऑफ रिडक्शन। इन कंसिडरेशन ऑफ रिडक्शन मतलब जो रिड्यूस हुआ, वॉट एवर यू रिड्यूस्ड इट, फॉर दैट you are paying preference shares. But read the sentence in trade payable. Yes, Dinesh Kumar. Yes, Trade sir. payable claim shall be Claim reduced shall be to reduced to 50%. 50%. Reduced to It is, 50% means by also 50%. yes, sir. It is to be settled by the issue of the equity shares. Wait. Trade Yes, sir. payable. What is the 72,000, amount? sir. 72,000. 72,000. Means 36,000 you reduced, Yes, sir. correct? Yes, sir. And plus 36,000 is to be settled. Okay. Yes, sir. Settled, not in consideration. For balance, you are issuing them equity shares The of 10 each out of share surrender. shares surrendered. Have you passed entry for creating shares surrender? We converted only preference share capital, Yes, sir. correct? And for 36,000, we are giving equity shares. Yes, sir. What we are giving? Equity shares. Equity So shares. first entry will be share surrender to equity share capital. Correct? Yes, sir. Share surrender to equity share capital 36,000. And Yes, sir. now creditors to capital reduction 36,000. And again creditors to capital reduction because you are not settling them out of your pocket. Yes, sir. You are settling them out of share Shares surrendered. surrender. Yes, sir. So I will pass entry trade payable account debit to capital reduction 72,000. So 36,000 for reduction and 36,000 not paying from my pocket, From shares surrendered. from share surrender. Yes, sir. So if I'm not paying from my pocket, it will be my benefit. Yes, sir. So in share surrender, in capital reduction, I will transfer full 72,000. Yes, sir. So either you pass two entries or you pass only one entry for trade payable. Okay, sir. Do not pass trade payable to equity share capital because you are not Yes, issuing them from your pocket. You are yes, sir. issuing them from Shares share surrendered. surrender. See why we pass this entry? Because you can see the language in consideration of the reduction. So it is you are giving for 75%. So remaining 25% you will continue with it. And here is to be settled. Means 50% you reduced and 50% you settled. So you are not continuing with the 50%. And that Oh, 50% you converted into equity shares. But equity shares you are not converting from your side. You are it's from giving shares them surrendered. these equity shares from share Shares surrendered. surrender. So share surrender to equity share capital only I converted, but I will write name of trade payable on that share certificate. So whether now I left with any balance in trade payable,
No, sir. ट्रेड पेबल में नो बैलेंस. Yes, sir. So trade payable account debit to capital reduction, 36,000 for reduction, and 36,000 again you are cancelling for settlement, but you are not paying from your pocket. So you saved that money. So again to capital reduction. So can I pass one entry? Yes. After having command on this chapter, you Yes, can sir. directly pass trade payable account debit to capital reduction. One. समझ में आ रहा है? Are you getting Yes. it? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Hardik has some problem. हार्दिक स्टिल नॉट गेटिंग इट बेटा. देखो दोनों सेंटेंसेस के लैंग्वेज में डिफरेंस है बेटा. पहली लैंग्वेज ये बोल रही है कि जो क्लेम है डिबेंचर होल्डर का वो 75% तक नीचे लेके आओ, और जो 75% नीचे लेके आए ना उसके कंसिडरेशन में हम लोग उनको दे रहे प्रेफरेंस शेयर्स, पर वो भी हमारे जेब से नहीं, वो भी शेयर सरेंडर वाले के जेब से. तो शेयर सरेंडर टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, और जो 75% है वो डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन बचा लिए, पर 25% अभी भी दिखेगा. 25% अभी भी दिखेगा, आगे कंटिन्यू होगा. कौन से फॉर्म में? 25% डिबेंचर्स फॉर्म में ही. सो फिर प्रेफरेंस शेयर्स वो तो 75% जो उन्होंने छोड़ दिया उसके लिए दिया, छोड़ दिया उसके लिए दिया. इधर वो नहीं, छोड़ दिया उसके लिए कुछ नहीं दिया. यहां पे बचा हुआ सेटल करने के लिए दिया ट्रेड पेबल. सो छोड़ दिया उसका क्या? वो छोड़ दिया, उसको कुछ नहीं दिया ट्रेड पेबल में. सो डिबेंचर होल्डर में दिया, कंपनी की मर्जी. ट्रेड पेबल का जो 50% छोड़ दिया उसके बदले में कुछ नहीं मिला, ठेंगा मिला. और जो 50% बचा वो सेटल किया बाय इशूइंग इक्विटी शेयर्स, वो भी हमारे जेब से नहीं, किसी और के जेब से, हमारे पुराने इक्विटी शेयर होल्डर वाले के जेब से. उनको सरेंडर करवाया और वो उसके बदले में दिया. ये दोनों भाषा में डिफरेंस है. सर ये डिफिकल्ट है समझने में, आप नहीं होंगे तो नहीं समझ में आएगा, पता है मुझे. मैं पहली बार करता था तो मुझे भी डिफिकल्ट लगता था. इफ आई वॉज डूइंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम, yes beta, it was difficult. It is over the time, same adjustment I did it for many times, so nice, now I can explain it very properly. But explanation beta, it will take some years of experience. It's not easy to explain this type of adjustments. अभी हार्दिक बोल रहा है now it's easy. दोनों भाषा में डिफरेंस है. एक में इन कंसिडरेशन दिया है ऑफ द रिडक्शन, एक में सेटलमेंट दिया है. दोनों भाषाएं अलग हैं. यस, सेटल किया मतलब पूरा लाइबिलिटी जीरो कर दिया. यहां पे 25% कंटिन्यूएशन में लाइबिलिटी, इधर लाइबिलिटी जीरो. यू कैन राइट ओवर देयर लाइबिलिटी, इधर लाइबिलिटी कंटिन्यूड विथ 25%, इधर लाइबिलिटी जीरो. Now you understood it. Dinesh, Yes, sir. you solved this illustration? No, sir. Except this illustration, I have completed all the other illustration. In this illustration, I've got a doubt in that it is to be settled by the issue of equity shares, right, sir? I've got doubt in that sentence because I thought the question is saying about reduced to 50%. So I thought it would be 36,000 only. But I Now, didn't. so listen, no. Yes, sir. Now, can you answer this question? Yes, sir. Tambeshwari Sure. asking me, she's asking me, why you passed third entry, Third entry. capital reduction account debit to trade payable?
Yes, sir. It's because in that entries we have seen three entries because first entry is about transferring share surrender to equity share capital one, and the other Okay. one is trade payables to capital reduction. It's because Is up uh, to 50% reduced. For that yes, sir. purpose, we pass this entry. And again, we pass this entry for reduction or The other, settlement. yes, sir. Reduction or settlement, third entry. Third entry is for And settling that. 50% and second entry for reduction. Yes, sir. So she is asking me why third entry, beta. Third entry we passed for settlement, beta, and we are not paying out of our pocket, and therefore we are passing entry trade payable to capital reduction, तांबेश्वरी जी. अभी इसमें इतना अच्छे से समझाने के बाद भी यू आर आस्किंग व्हाई यू पास थर्ड एंट्री, तो क्या बोलूं मैं इसमें? यस बेटा, आप ही बोलो. सर अगर सर हमने अपनी पॉकेट से दिया होता तो सर हम इक्विटी शेयर कैपिटल लिखते. यस, यदि शेयर सरेंडर में से नहीं दिया रहता तो ट्रेड पेबल टू इक्विटी शेयर कैपिटल हुआ रहता. ओके हमारे सर, पॉकेट यही. में से नहीं दिया तो हमारा बच गया पैसा. ओके सर, यही ये पूछना था. सेटलमेंट, और ऊपर सेटलमेंट हुआ ही नहीं है. इन यस सर. कंसिडरेशन ऑफ 75% दिया है, तो 25% अभी भी कंटिन्यूएशन में चल रहा है बेटा. यस सर, यही सर इलस्ट्रेशन 7 में प्रॉब्लम होता था सर. कुछ है ही नहीं इतना डिफिकल्ट. अभी सर क्लियर हो गया ना, अभी नहीं होगा. P ओके and सर. L account has to be written of Dinesh Kumar. What will be the Yes, entry? entry will be capital reduction account debit to P&L account. Very good. Capital reduction to P and L. 6 Yes, sir. lakhs. And the other And and the other what is the 4,000. balance in share surrender? It's the balancing share surrender is 6,04,000. Huh? Sorry. 5 lakh, in 5 lakh we have taken as 1 lakh and 3 lakh I have 36,000. I have Looks like, prepared this diagram also here. Tree yes, chart. sir. 5 Yes, sir. lakh, 1 lakh preference share capital, 36,000 equity share capital, and 3 lakh And the other 64,000 is 3 for, balance. yes, sir. And balance, we are not giving any preference shares or equity shares out of this. Yes, So sir. this They have will be said it should transferred be to. capital. So we are transferring it to capital reduction account, sir. Very good. So share surrender account debit to capital reduction, 3 Capital lakh reduction. 64,000. Okay. Yes, sir. And now balance in the capital reduction. See, first entry no capital. Yes, here it is 2 capital reduction. How much? 168, correct? Yes, sir. 1,68,000. Don't take all digits. Okay, sir. 168. 168. Yes, sir. Then 36 Then plus 70. 36. Yes, sir. 72. And then 364. Yes, sir. And now 6 lakhs is debited minus 600. So how much balance is left with the capital reduction? 4,000, sir. Okay. Combined entry you can pass better, no problem. Trade payable to capital reduction 72,000. You can pass. Abhishek, nothing harm in that. Why I passed 2 entries? Because I want to show you one is for reduction and one is for settlement. That's why I passed 2 entries. You can pass single entry also. Okay. Yes, better tell me, Ye- is difficult or easy? Yes, sir. It's fine. It's easy now, sir. Every one of you, after explanation, it was easy. Yes, sir. चलो, थैंक्स टू आईसीआई आपको इतने अच्छे से फैकल्टीज एक्सप्लेन कर देते हैं, है ना दिनेश कुमार? You should Yes, sir. always thankful to ICAI. Yes, sir. Definitely, sir. That is also free of cost. Yes, sir. ठीक है. Yesterday I got one call from, I don't know that student name. Actually, he cleared his exam and he wants to meet me personally. And this is means it shows that now you people are also believing in ICI.
classes, because many students, they are not aware of these things. Because I really feel like that ki why students are not aware about these activities. Means you should take interest. You are not you want to spend money only, and we are taking it from the study material. Still students are not taking benefit of these classes. So tell to your next, you whatever those students who joined it, okay, Yes, take sure. our Yeah. institute classes Yes, sir. to suggest them. Okay. Yes, How sir. you got to know, Dinesh ji, these classes from mail? No, sir. It's like at first I've started seeing random YouTube videos in website in online. So in that video, I got a CA tube, I think so, sir. In that, I've got a link of Boss Live. So I've searched Boss Live in Google and I got a website, sir. Okay, okay. Creative you got from Yes, sir. videos. Okay, from suggestions. Yes, sir. Arey wah. Yes, good. And what about mail? You're not getting mail of mails classes. No, sir. At first, I didn't get any mail classes, but right now I'm getting, sir. Okay. अजित सर देखिए बच्चों को मेल भी नहीं जा रहा है प्रॉपरली. इफ यू आर लिसनिंग, other students, you can write it in comment section how you got the awareness about these classes from mail, or actually we mail only. Preeti likh rahi hai. Okay. Through my friend. Wow. Nitin Prajapati from Chartered Studies. Okay. Hardik friend. Mail. Vaidehi. Same like Dinesh. Mail. Aisha. Registration form fill karte time. Okay. ICAI Boss app. Website. Okay. ठीक है. चलिए. So we completed Yes, sir. 7 number. Yes. One question is still difficult Branch. one, that you have to do it in the break. I will tell you that question. Yes, sir. I think it's from TYK. Now I'm not giving you break, just telling you in break you have to complete it. Question is 10 number, TYK 10. Yes, sir. Okay, every one of you will do it in the break. How many Yes, sir. questions are there? Only few questions. Okay, ठीक है. See, this question is of A category, 7 number. Otherwise, other questions are very simple. Dinesh, you got all correct answers, beta. All Yes, entries. sir. Other than seventh one, I've got all the other than seventh illustration, I've got all the other Okay. sums correctly, sir. Yes, very good. Chalo. Next question. Rachna, read. Good morning, sir. बोलिए. So Recover Limited decided hidden entry. हाँ. The preference shares were reduced to 2.5 per share and the equity shares to rupees 1. Whether this is reduction or reduction in face value or paid up value. Paid up value, sir. Actually now reduction in actually paid up value, because we do not have any connection for this. No, but you can see here one new equity share of rupees 1 issued. So this is not reduction in paid up value, because new face value is rupee 1. So it is Okay. reduction in. Face value. So you have to see other entries for this. Entry reference
Roman 2. Yes, sir. ठीक है? Yes, sir. So reduction in the face value. How much? So preference share capital 15,000 shares है और उसका बोले बोले 37.5 देंगे 2.5 तो 15,000 into 2.5 37.5 so preference share capital 150 to preference share capital 15,000 37,000 into how much is there? 10 rupees, no? 10 सर वो और कन्वर्ट ये करेंगे converted into 2.5 15,000 into 2.5. yes sir so entry होगा preference share capital debit 150 1,12,500 yes sir कैपिटल रिडक्शन में जाएगा. yes sir और Okay, preference share so capital में preferential capital account 37,500 debit 1,50,000 to preferential capital 8% 37,500 and 1,12,500 capital reduction. Correct? yes sir Next. And one new equity share equity of shares, how many equity shares are there? 20,000 into 20,010 10. Okay. And you will convert it into 20,000 into 1. 1 so So entry will 20,000 be equity share capital 200 to equity share capital 20 to capital reduction 180 बेटा हियर यू डोंट अप्लाई कैलसी पे हम लोग करेंगे इधर पूरा ही लिखेंगे ऑल डिजिट्स ओके सर तो सो मैंने ऐसे इक्विटी लिखा शेयर कैपिटल 2 lakhs टू इक्विटी शेयर कैपिटल 20 टू कैपिटल रिडक्शन 180 एग्जाम है में भी हाँ मीन्स यू हैव टू यूज ऑल डिजिट्स हाँ कैलसी पे यू आर टेकिंग ओनली फर्स्ट 3 डिजिट्स हाँ इफ दे हैव रिटर्न इन करोर्स देन यू कैन टेक ओनली दैट डिजिट्स बट उन्होंने लैक्स में लिखा है रुपीज में लिखा है तो व्हाई आर यू चेंजिंग इट टू 1000 नहीं सर वो डोंट रेफ में चेंज की इट थी ना तो की थी मैं ओके पूरा ही लिखूंगी ठीक है. One new equity shares are issued for arrears of preference dividend. Arrears of preference dividend is contingent liability or normal liability? कंटिजेंट सर Contingent. So there is no debit to cancel it. Therefore debit किसको करेंगे? कैपिटल रिडक्शन को Very good. Therefore debit capital reduction. Are you writing it or not? यस सर Right. ये लिखा है मैंने ऑलरेडी So 15,000 into 8% into 10. 15,000 into 10 into कितना परसेंट? 8% सर 8% into 1 year. 12,000 आएगा इंटू 4 What is the amount? 12,000 सर 12,000. So capital reduction to for 4 years. No, sorry, I सर multiplied by only 1 year. इंटू 4 4 सो years. 8,000 होगा So entry will be कैपिटल रिडक्शन to equity share capital. इक्विटी Correct. शेयर कैपिटल यस सर Next. The debenture holders took over the freehold property at an agreed figure of 75,000 and paid the balance to the company after deducting the amount due to them. So what is the debenture holder balance? 50,000, sir. 50,000. And property Interest valuation. 1,20,000. Interest also you have to take, no? Yes, sir. 5,000 interest. $5,000 interest. And paid the balance. In cash. Okay. So how much is the freehold property balance, my dear? 1,20,000, sir.
So वो balancing figure आएगा. Okay, sorry. 75,000 was to them. So 1,20,000 and capital reduction. This is the IMP entry, yeah, beta. Yes, sir. And balance means 20,000 they will pay. Yes, sir. And 1,20,000 minus 75,000 का balance Yes. capital So reduction. freehold property, that will be capital reduction. See, debenture holders are giving me 20,000 bank balance because they agreed to take the property at 75,000. So my property valuation is actually 1,20,000. So if you want to pass two entries, you can pass two entries. From 1,20,000, you reduce it to 75,000. So capital reduction will be 45,000, correct? Yes, sir. So 1,20,000 ki property, 75,000 means you are in loss, Yes, sir. 45,000. Or otherwise you will pass only single entry. Which one is better? Single entry, sir. All of you beta, single entry is better. ठीक है. So 75,000 minus 1,20,000. 1,20,000. Easy? Yes, sir. हाँ. Plant and machinery was written down to 1 lakh. Plant and machinery का balance है 1,30,000. So entry will be capital reduction 30,000 to plant and machinery 30,000. 1,30,000 to 1 lakh means capital reduction 30,000. Yes, beta. So I said goes out and capital reduction will be in the loss. Next. Non-trade investments were sold for 32,000. Book value है 40,000. So we are in loss of 8,000. So bank account 32,000. Cash capital reduction 8,000 to investments 40,000. Yes, very good. And Goodwill. goodwill and obsolete stock included in value of inventories of 10,000 were written off. So goodwill So value is, how much is the goodwill value? 50,000, sir. Goodwill का value 50,000 है and inventories 10,000. Capital reduction debited with 60,000. So goodwill account, capital reduction account debit to goodwill to inventory 60,000, correct? Yes, sir. A contingent liability of which no provision had been made was settled at 7,000. Of this amount, 6,300 was recovered from the insurance. ये entry थोड़ा उतना नहीं समझ आया सर. You can pass two entries for this. Actually, liability की entry नहीं होती है. Institute ने क्या किया था entry? वो Contingent two liability entry account open किए किया हैं है सर. क्या? ठीक है, तो वैसा ही करेंगे. First you see contingent liability is a temporary account. Yes, sir. Contingent liability is a Temporary account. temporary account. You can pass two entries also, one entry also. Capital reduction account debit. Ultimately, you are paying 700 from your pocket, no? Yes, sir. So you can see capital reduction to bank 700 entry you can pass. Okay? But we will pass it in the institute way. See, first, what is the liability you are settling? 7,000, sir. So two banks, 7,000, correct? Yes, sir. We opened one temporary account, contingent liability account. Okay. Yes, sir. And then bank account, how much we are getting for this liability? 6,300 from insurance. Ultimately, we have to cancel this contingent liability because it's a temporary account, and balancing figure we will debit it to capital reduction. Got the concept? Yes, sir. And if you don't want to pass two entries, you can simply pass one entry, capital reduction to bank 700. But Okay, sir. Difference. institute में लिखे contingent liability to bank, bank account debit, capital reduction to contingent liability. Easy? Yes, sir. Then capital reduction to hidden entry, P&L, 70,000. Have you written hidden? Yes, sir. I forgot. Hidden, 70,000. This is the hidden entry. Capital reduction to P&L. And last entry will be capital reduction to capital reserve. Take on calci. Yes, beta. Starting में. 1,12,000. 1,12,000. 112.5. अभी आप बोल नहीं रहे हो कैल्सी पे.
Yes, sir. हाँ, Plus 180, plus 180, minus 48, minus 48, minus 45, minus 45, minus 30, minus 30, minus 8, minus 8, minus 60, minus 60. minus 0.7. Very good. Minus 0.7. Minus 0.7. Huh? All of Yes, sir. you. Minus 70. Minus 70. 30.8 आएगा. 30,008. 30.8. So 30.8 is a balance. Yes, sir. एंट्री नंबर 3 में बैंक में यस पूजास जी बैंक अकाउंट के सामने 75 माइनस 55 होना चाहिए. 70 माइनस माइनस 55. हाँ सॉरी इधर मेरा गलती हो गया. 55 होना चाहिए. माइनस 50 माइनस 5. यस यू आर करेक्ट. चलो नाउ डू दिस अपडेशन. यस बेटा. So प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 150 कैंसिल करेंगे और 37.5 को ऐड करेंगे. एंड फेस वैल्यू कितना लिख देंगे इंस्टेड ऑफ दिस. 2.5 रुपीज 2.5 एंड वी और लाइक 37 500. इक्विटी शेयर कैपिटल 200 कैंसिल करेंगे और 20,000 लिखेंगे. ₹1 फेस वैल्यू. 1 का 20,000. नेक्स्ट ये हो गया ये हो गया. नेक्स्ट इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल अगेन एड 48,000. 48,000 ऐड किया. नेक्स्ट डिबेंचर्स और डिबेंचर इंटरेस्ट कैंसिल होगा. बैंक अकाउंट ओपन करेंगे 20,000 बैलेंस. इंटरेस्ट 5,000 एंड बैंक बैलेंस विल रिड्यूस बाय. सर ऐड करेंगे हाँ सॉरी बैंक इज नया आया. 20,000. 20,000 ऐड. फ्री होल्ड को कैंसिल कर देंगे फ्री होल्ड 120,000. प्रॉपर्टी वी विल कैंसिल इट बाय 1,20,000 फुल. वेरी गुड. क्या एंड बात है. प्लांट एंड मशीनरी रिवैल्यू होगा. सोर्स का वैल्यू होगा 1 लाख माइनस 30,000. एंड नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स पूरा 40,000 कैंसिल होगा. एंड एक सेकंड. बैंक में बैंक में 32,000 ऐड होगा. 32,000 ऐड होगा. यस सर. बैंक प्लस 32,000 हाँ एंड इन्वेस्टमेंट वी रिड्यूस इट बाय 40,000 फुल. 40,000. नेक्स्ट एंड गुडविल कैपिटल रिडक्शन टू गुडविल टू इन्वेंटरी. सो गुडविल का 50,000 माइनस इन्वेंट्रीज माइनस 10,000. इन्वेंटरी माइनस 10,000. बैलेंस शीट And then अभी डिफिकल्ट नहीं जाता बेटा आपको. नहीं सर, एंट्रीज के थ्रू बहुत इजी होता है. बैंक 7,000 माइनस 7,000 प्लस plus 6.3 6,300. एंड देन कैपिटल कैंसिल रिजर्व होगा. 30,800. P&L ऐड करेंगे P&L 70,000. ऐड करेंगे 70,000 70,000 तो ये बैलेंस जीरो हो गया. और एंड कैपिटल 30,800 रिजर्व कैपिटल रिजर्व 30,800. 800. Okay, so my equity share capital is 68,000 plus 37,500. 37,500. एक सेकंड. 1,05,500. एक सेकंड हैंग हो गया. 1,05,500. इधर गया ये. एक मिनट ना बेटा. Yes sir. 1,05,500 correct. Yes sir. Reserves 30,800. 30,800. Long term borrowing 0. लॉन्ग टर्म बोरिंग 0. एक सेकंड ऊपर लिख देता हूँ. फ्री होल्ड Trade प्रॉपर्टी payables 0. 85,000. 1 1 lakh. lakh.
So 1,85,000 1,85,000. और लिख देता हूँ 1,85,000. Intangible assets 0, ये भी 0. Goodwill 0. So intangible assets 0 and Non-current investments also 0, sir. now trade payable, Trade no change. payables 80,000. Short-term borrowings You can keep 90,000. short-term borrowing as it is, or Yes, you sir. can pay it off from bank balance also. Both are same. Balance कम है sir वो. Balance is less, so मत कीजिए पे. 20,000, 50,000. 50,000. We do not have Bank huge balance cash balance, therefore we are not 51,300. paying. No, we are not. If we are having huge cash balance, then we can pay bank OD also. Okay. Yes, sir. So you just have to identify. 3,06,300. Tally Yes, sir. 3,06,300. Three lakh 6,300. Correct. Yes, sir. Very good. ये इजी था. हाँ सर ये इजी था. मेरी जरूरत ही नहीं लगती अभी आपको. कौन सा टफ था आपके लिए? सर 781 में 2-3 एंट्रीज टफ था, तो उसके अलावा 5, 6, 8 पूरा आ गया था. कौन सा बचा अभी? 5th वन सर. फिफ्थ वन इजी और डिफिकल्ट? इजी है सर वो, उसमें तो कोई भी एंट्री डिफिकल्ट नहीं है, डायरेक्ट है ये सब. Okay, only we'll discuss journal entries. Balance sheet you will do from your own. यस सर. ठीक है. थैंक यू बेटा. नेक्स्ट Thank you, कौन कर रहा है हैंड रेस? अदर स्टूडेंट? नीरू. चलो नीरू बेटा, फिफ्थ इलस्ट्रेशन फास्ट. Yes, sir. The following scheme of internal reconstruction is section. All Okay. the exciting equity shares Existing are equity shares. yes All the existing equity shares. are reduced to rupees 40 each. So this is reduction in face value or reduction in face value or reduction in paid up value? Paid up value, sir. Face value beta. Oh, sorry. It is reduction in, if nothing is mentioned ना, तो अभी rule apply कर दीजिए. It is reduction in the face value only. Yes, sir. Okay, so this entry is very easy. Equity share capital. अच्छा ये एंट्री तो अभी आ गई है, बहुत बार हुआ है. All preference Yes. shares are reduced to 60 rupees, ये भी हो गया. The rate Yes. of debentures interest is 6% से आपने change किया. So 5% to 6%. So 5% debentures to 6%. And the 6%. debenture holders surrender their share debentures, and in exchange they got fresh debenture of 70 rupees. तो 100 rupees को 70 rupees दिया. करेक्ट है? Yes, sir. तो 80 lakhs को कितना मिलेगा? 56 lakh, Okay. 6% So debentures. 5% debentures account debit 80 lakhs to 6 Yes. to 6% debentures 56 lakhs and to Yes. capital reduction 24 lakhs. lakhs. तो ये एक नया एंट्री था. IMP Yes. बोल देता हूँ इसको, नया न्यू था. ये इजी था. प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट डाउन मींस कैपिटल रिडक्शन टू PPE. 2P. करंट एसेट्स 90 लाख. स्टार्टिंग में कितना था? 2 करोड़. सो कैपिटल रिडक्शन टू Current assets. करंट एसेट्स. इन्वेस्टमेंट्स आर टू बी बॉट, ये भी हो चुका है. 19 lakhs मींस 1 lakh से रिड्यूस कर रहे हैं. वन ऑफ द क्रेडिटर्स 40 lakhs, they decided to forgo 40% of the claim, and the creditors is allotted with the final settlement, not in consideration.
तो 2 Yes. points now check it for final settlement. So Yes. creditors account debit 40 lakhs. 20 lakh. To equity share capital and to capital reserve. Reduction, Capital sorry. reduction. Capital reduction. करेक्ट है? Yes, sir. सो इंस्टीट्यूट ने नहीं पास किया 1 by 1 एंट्री. ट्रेड पेएबल किधर है? ट्रेड पेएबल, हाँ ठीक है. Yes, sir. Taxation liability you settled it for 3 lakhs. What is the liability? 2 lakhs. So 2 lakhs. provision for tax account debit 2 lakhs, to bank 3 lakhs. तो capital reduction debit 3 में आ lakhs. जाएगा. Yes. डेबिट में आ जाएगा 1 lakh. Yes. ये एक नया था, आईएमपी लिख के रखो. टैक्सेशन लाइबिलिटी. Yes. ओके. सो वापस प्रोविजन फॉर टैक्स हाउ मच? 2 lakhs, to bank 3 lakhs, and 1 lakh is balancing figure. And debit in profit and loss account we are already aware about this entry, so no need. Yes. So ये entry easy. Balance sheet you can do by your own. Yes, sir. So today's homework, beta, you have to fare all these entries, and tomorrow we are going to finish it off, huh? Yes. Tomorrow we have class, though it is not in schedule. We are going to complete it. And now which question, beta, you are going to finish it off? TYK 10. 10. Chalo. So I will meet you at 8:45. 30 minutes, okay, for that question? Yes, sir. Yes, Hardik. बोलिए बेटा. सर क्वेश्चन 8 में सर एक छोटा सा डाउट था सर. सर वो जो लास्ट एंट्री थी सर, उसमें मैंने कंटिंजेंट लायबिलिटी का वो टेम्परेरी अकाउंट ना खोलकर सर मैंने कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू बैंक करा 7,000 एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन 6,300. गलत है सर? हाँ ठीक है, वैसा भी चलेगा, नो प्रॉब्लम. ठीक है, क्योंकि सर वो नेट इफेक्ट तो तभी भी 700 नेट ही इफेक्ट आता 700 आएगा. यस, वो भी चलेगा. है. ओके सर, थैंक यू ठीक सर. है. यस. सो नाउ विच क्वेश्चन बेटा हार्दिक? 10th TYK. हाँ यस सर. सानिया. यस बेटा. यस Good सर. morning, sir. हाँ बेटा सानिया. Sir, in illustration 6, sir, I think there is some language problem. 6 में लैंग्वेज प्रॉब्लम है. क्या प्रॉब्लम Sir, है? adjustment 1. Sir, I think it should be understood as preference shares are issued for 30% of their capital. So Give up debentures are issued 30% for. of their capital, no? Give up means they are leaving it, they waived it off. Yes, sir. And sir, debentures are issued in exchange for 30%. No, I don't think there is any language problem. Means, yes, definitely institute can use better language over here, but ठीक है, means it is interpretable. Yes, sir. This adjustment was wrong. Now you understood it, no? Yes, sir. But क्या आपको लैंग्वेज सही नहीं लग रही है? no, sir. क्या होनी चाहिए थी? Sir, it should be as the rest or the balance is exchanged for allotment of 11% अभी समझ गए हो ना? debentures. हम लोग अभी कहाँ लैंग्वेज बदलते बैठेंगे बेटा, रहने दीजिए. अभी समझ गए हो ना आप? वुड गिव अप Yes, sir. 30% एंड 70% का अलॉटमेंट करना है बस. ओके, याद रखना Okay, ये sir. आया तो. Yes, sir. मैं ये क्वेश्चन की लैंग्वेज भले बदल दूंगा, पर एग्जाम में थोड़ी वो आपको ऐसे वही क्वेश्चन रिपीट हो सकता है. Yes, sir. तो रहने दीजिए ये लैंग्वेज. ओके, चलो ठीक है. टेक अ ब्रेक. Okay, sir. ब्रेक नहीं बोलेंगे, हम लोग मिलते 8:45 को, बिकॉज यू हैव टू सॉल्व वन क्वेश्चन. 20 मिनट्स तो जाएगा आपका, एंड वी कंप्लीटेड होमवर्क. ठीक है.
चलो स्टार्ट। निसर्ग ले लेना। निसर्ग।
स्टार्ट टीवाई के 10। निसर्ग में आ गया हुआ। टीवाई के 10। Yes, who wants to read? Okay, who wants to read? Tanu? चलो बेटा, आया 10 नंबर? यस सर। टैली हुआ? सर टैली नहीं हुआ, थोड़ा समझ नहीं आया मुझे। तो वही तो पूछा मैं, आप बोलो यस सर आ गया करके। ठीक है। सर मैंने एंट्री किया है, पर वो इंस्टीट्यूट से मैच नहीं हो रही है। ठीक है, फिर इंस्टीट्यूट सर को पढ़ो। चेंज करने बोलते हैं आपके हिसाब से। नो चलेगा? सर। तो इंस्टीट्यूट को बोल देते हैं कि तनु जी को इतना ही आया, आप इस हिसाब से बदल दो एंट्रीज। नो सर। ठीक है सर ठीक है। मेरा ही गलत होगा। कोई बात नहीं बेटा, टेंशन सर मत रीड करो। लीजिए। ठीक है। यस। हम्म। द रीड। फॉलोइंग स्कीम ऑफ रिकन ओके सर। हाँ। The following scheme of reconstruction is approved by all parties interested and also by the court. A uncalled capital is to be called up in full and such shares अनकॉल्ड and the कैपिटल कितना other है? fully paid up shares, equity shares of company. Certain. अच्छा, 40 पेड अप, 50 फेस Yes sir. वैल्यू। सो कॉल्ड अप कितना करना है? Sir 10 lakh. सो एंट्री क्या होगा? Bank account debit to equity share capital. वेरी गुड। बैंक अकाउंट डेबिट टू Equity इक्विटी share शेयर capital. कैपिटल 10 लैक्स, करेक्ट है? Yes sir. हाँ, अभी नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो गए टोटल? 1,50,000 Sir 1,50,000. टोटल हो गए। सी, Yes sir. 50,000 एंड 1 lakh। ऑल आर 50 पेड ईच। Yes sir. दे आर गेटिंग कन्वर्टेड इनटू। Sir 20 each. तो अपना फायदा कितना हुआ? Sir 30 का। 30 रुपीज कैपिटल रिडक्शन। Yes sir. करेक्ट। सो एंट्री। Yes sir. Sir एंट्री होगी इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 20 each to capital reserve 30 each. टू कैपिटल रिजर्व या Sir कैपिटल capital रिडक्शन? reduction. Sir capital हाँ, reduction. चेक करो। Yes sir, ये तो सही है। ठीक है ना? सो इंस्टीट्यूट और ये आपका दोनों का सेम आया, करेक्ट? Yes sir. तो ये एंट्री में कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। No sir. नेक्स्ट, Sir मिस्टर एक्स Mr. इज टू X is कैंसल 7 7 lakh lakh of of his his total total debt. debts. Okay, read, Yes sir. read. Sir, other than share amount to pay rupees 2 lakh to the company and to receive new 14% first debenture for the balance amount. ये नहीं आया ना? Sir, yes sir. ठीक है। सी, मिस्टर एक्स एंड मिस्टर वाई। मिस्टर एक्स के पास फर्स्ट डिवेंचर्स के कितने पैसे हैं? Sir, first debentures के 3 lakh. मिस्टर एक्स के पास। और Yes वाई sir. के पास? 2 lakh. हो गया ब्रेकअप पूरा? Yes sir. सो यू कैन राइट ऑन 12% फर्स्ट डिवेंचर, एक्स 3 lakhs, वाई 2 lakhs ओवर। Yes sir. 12% डिवेंचर, एक्स के पास कितना? 7 lakh. वाई And के Y के पास? पास 3 lakh. ये 3 ब्रेकअप भी lakh. लिख दिया। So we have written Yes this sir. breakup, okay? And what about Yes sir. trade payable?
सर ट्रेड पेबल एक्स का 2 लाख है एंड वाई का 3 लाख। चेक करो वाई का कितना है। कितना है वाई का? सर वाई 2 लाख। चेक करो 2 लाख बाबा, 1 वाई का लाख चेक सर। करो। अंदर शांति से पेशेंस रखिए थोड़ा। हाँ कितना है वाई का? 1 लाख क्यों 2 लाख और ये बोल रहे हो आप? तो अदर्स का कितना है? सर अदर्स का 2 लाख। बैलेंसिंग फिगर करेक्ट। यस So सर। what it means? First debenture is between X and Y. Second यस सर। debenture is also between, एक्स एंड वाई। and trade payable X plus Y plus others. Got this? समझा क्या तन्नू जी? अरे हाँ या ना? यस सर। चलो सर वॉइस नहीं आ रही है। बीच बीच में कट हो रही है। Now ओके सर। Mr. X is to cancel 7 lakh is of his debt. अभी उसका टोटल डेट कितना है? सर 12 लाख। And he wants to cancel 7 लाख। 7 lakh. And to pay 2 lakhs additional to the company यस सर। and receive 14% 14%। first debentures for the balance amount. So मैं पहली एंट्री क्या करूंगा? फर्स्ट डिबेंचर। फर्स्ट मैं क्या करता हूं? फर्स्ट आई विल पास एंट्री ऑफ ड्यू एंट्री। सो टोटल मुझे कितना देना है उसको? ओके सर। फर्स्ट डिबेंचर अकाउंट डेबिट, 3 लाख। सेकंड डिबेंचर अकाउंट डेबिट, ट्रेड 7 पेबल लाख। अकाउंट डेबिट, 2 लाख। टोटल 12 lakhs. 12 लाख। Correct? यस सर। Additionally he is paying me, 2 लाख। so bank account debit to X 2 lakhs. So how यस much सर। I have to pay him? Total सर 10 लाख। 14 lakhs. No, how 10 lakhs? He brought यस rupees. सर। What are you doing, beta? 12 lakh rupees to X. Again to X 2 lakhs rupees. He brought rupees 2 lakhs. Understood? यस सर। And to pay यस सर। rupees 2 lakhs to the company, he will pay to the company. So how much is the total liability now? 14 लाख। 14 lakh. How much he is going to reduce? 7 लाख। So can I write 2 capital reduction 7 lakhs? यस सर। He is going to reduce 7 lakhs, no 10 lakh कहाँ से बोल रही हो आप? सर 7 लाख ही बोला मैंने। 7 lakhs ही बोला, sorry. 2 capital reduction 7 lakhs. And then to 14% first debenture डेबेंचर। 7 lakhs. Now you got this entry. यस सर। Is it difficult or easy? सर इजी सर। फिर आपने क्या गलती किया? सर मैंने सारा एंट्री एक ही में मर्ज करके कर दिया था, तो Okay. अमाउंट तो वही आया, बट मैंने एक ही एंट्री की सारी के लिए। One more time. Preeti, raise your hand, beta. हाँ प्रीति, देखो, first we will cancel his liability, so we should know how much we have to pay him. Yes, sir. So first debenture, second debenture, trade payable account debit to X. How much we have to pay him? 12 लाख। 12 12 lakhs. lakhs. Preeti, understood? Yes, sir. फिर how much he contributed बेटा extra? 2 lakhs extra. 2 लाख।
2 लाख। तो रुको तन्नु अभी 1 मिनट, आपको समझ में आया है, प्रीति को नहीं समझा है। सो प्रीति, एनी Okay, sir. डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग दिस एंट्री? sir. हाँ, Sir. so these accounts are getting cancelled and we have to pay to X this amount, 12 lakhs. Or say yes or no. Yes, sir. And then we are paying to X 14 lakhs rupees, but we want to cut down 7 lakhs. He's not taking that 7 lakh rupees. Correct? Yes, sir. And two, what he is taking for the balance? 14% debentures. Is it difficult? नो सर, मेरे को ना सर यहाँ पे डाउट था, ये जो 12 लाख जो हम पे कर रहे हैं एक्स को, और फिर ये एक्स्ट्रा 2 लाख, वहां पे डाउट था, मेरे अब क्लियर हो गया। ही इज टेकिंग मनी ना, अपन ने नहीं कुछ किया, वो पैसा देने को राजी है तो हम क्या करें ना, 2 लाख रुपए दे रहा है, वो दे रहा है तो ले लो। डन सर। ओके, तो आप वो कंफ्यूज मत होना कि वो 2 लाख क्यों देगा, हमें उसको देना है उसको पैसा, इच्छा है उसकी देने की। यस सर। यस, एवरीवन इज क्लियर नाउ बेटा, एवरीवन? प्रीति इजी बेटा एकदम? Yes. अभी आप ही बताइए प्रीति, यही वाला। Mr. Y is to cancel 3 lakhs of total debts and accept 14% first debenture for total debts balance. बोलो कितनी एंट्रीज करोगे? सर इसमें 2 एंट्री होंगी। हाँ बोलिए। सर फर्स्ट वाला फर्स्ट डिबेंचर्स, हाँ, फिर सेकेंड डिबेंचर 3 लाख, और फिर टोटल हम पे करेंगे। हाँ, ट्रेड पेबल 1 lakh 1 to लाख। Y 6 lakhs, correct? सर And then सर एडिशनल तो कुछ भी नहीं है, और फिर फर्स्ट डिबेंचर्स होंगे Y account debit how much? 6 लाख 6 lakhs to capital reduction, 3 लाख, he wants to cancel it, and two 14% फर्स्ट डिबेंचर्स 14% first debenture 3 lakhs over. Nice beta. 1 2 3 4 X, and for Y only 2 entries over. Easy or difficult? इजी सर। So what is new in this first due entry? ड्यू First एंड due entry देन पेमेंट। and then settlement entry. सॉरी। Our basic rules: personal, real, nominal. यस Nothing is difficult. तन्नू, Yes, sir. क्या डिफिकल्ट था बेटा इसमें? सर डिफिकल्ट नहीं था, मैंने एंट्री सर सारा एक ही में मर्ज करके कर दिया था, मैंने वाई का अकाउंट नहीं खोला था। अभी इजी ना, ड्यू एंट्री सेपरेट एंड सेटलमेंट एंट्री सेपरेट. यस सर। ओके सर। Okay. The amount or render सर मर्ज available. करके नहीं कर सकते हैं? क्यों करना है बेटा, अभी आपको लाइफ ऑलरेडी अपनी कॉम्प्लिकेटेड है, क्यों इतने ओके सर। कॉम्प्लिकेशंस बढ़ा रहे हो? ड्यू एंट्री अलग रखो, सेटलमेंट अलग रखो ना। ओके सर। कर तो सब कुछ सकते हैं, मैं तो एक ही एंट्री में पूरा रिकंस्ट्रक्शन करवा दूं। एक्स और वाई भी क्यों अलग अलग करने हैं, एक ही एंट्री में सब कुछ करो। इजी रखो ना लाइफ को, पहले ड्यू एंट्री देन सेटलमेंट एंट्री, रूल्स भी वैसा ही बोलते हैं ना। यस सर। ऑलरेडी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है। चलो, गुडविल राइट ऑफ हाउ मच? 20 लाख। 20 lakhs. 20 लाख। So capital reduction 20 lakhs. Capital reduction to goodwill 20 lakhs. P&L कितलो छे? P&L 20 लाख। again 20 lakhs. 20 लाख। And whatever the balance is remaining in that will write off कैपिटल computer. लिखा है उन्होंने, कंप्यूटर। balance to be write off to the computer. So here no more capital reserve. So capital reduction to goodwill सर to 15 P&L लाख। 15 lakhs will be the balance in the capital reduction. Understood? यस सर। यस यस सर। बैलेंस शीट चलो बोलो फटाफट।
बैंक में कितना लिखूं? सर 75। सर चलो ना 30 लाख। ऐसा करते बैलेंस शीट हम लोग। हियर सर जर्नल डिडक्ट एंट्रीज। करेंगे ना उसमें से। अरे बैलेंस शीट एंट्री बाय Riti, how we prepare balance sheet? Riti, इसका वे करेक्ट है? What she is doing? बेटा 10 बैलेंस शीट हुए अभी तक तन्नू। आपको बैलेंस शीट कैसे करना है तन्नू पता नहीं है? सर पता है। हम लोग ऐसे थोड़ी बैलेंस शीट बनाते हैं, एंट्री बाय एंट्री जाते हैं ना। यस सर। रश्मि जी, व्हाट यू आर डिडक्टिंग? आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई यू आर डिडक्टिंग। यू गो एंट्री बाय एंट्री। मतलब मैं जो सिखा रहा हूं इट इज ऑफ नो यूज। तनु जी बोलो जरा क्या करना है। सर इक्विटी शेयर कैपिटल प्रीति बोलो बेटा, आया है आवाज ही नहीं आ 10 रहा है लाख का, आपका। तो उसको हाँ, हम ऐड करेंगे। अच्छे शांति से बताओ बैंक का क्या करूं? सर बैंक आया है तो उसको ऐड करेंगे। हाँ, नेक्स्ट। एंड शेयर कैपिटल 10 लाख से ऐड करेंगे। हाँ, नेक्स्ट। एंड 75 से डिडक्ट करेंगे शेयर कैपिटल। -75 lakhs। हाँ, एंड न्यू एंड फेस वैल्यू ऐड करेंगे 20। 30 न्यू लाख। फेस वैल्यू 30 lakhs। यस सर। करेक्ट। यस सर। नेक्स्ट। कैपिटल सर रिडक्शन इज अ नेक्स्ट टेम्पररी 30 अकाउंट। लाख। यस हाँ, सर, तो 30 लाख ऐड करेंगे हम लोग इक्विटी शेयर कैपिटल का। कर दिया ना, कितनी बार करूं? ये देखो ना, सर फिर 30 लाख। नेक्स्ट। ओके सर। हम्म, सर फिर डेवेंचर कैंसिल करेंगे 3 लाख से। ये पूरा ही कैंसिल हो जाएगा दोनों भी। यस सर। अभी 3 लाख कैंसिल हुआ। हाँ जी। देन सेकंड डेवेंचर भी कैंसिल हो जाएगा 7 लाख से। एंड ट्रेड ओके, पेबल 2 7 लाख लाख से। कैंसल्ड। हाँ, एंड ट्रेड पेबल 2 लाख से। ट्रेड पेबल 2 लाख से कैंसिल हुआ। यस। एंड सर फिर हम लोग X is करेंगे। a temporary account. X यस सर। credit, X debit, so it's a temporary account. Then बैंक एंड में कितना बैंक ऐड करूं? 2 लाख ऐड करेंगे। तो आप क्या कर रहे थे? ऐसा आपको पता है ना ये करना है करके। आप डायरेक्टली कैसे यस सर। बैलेंस शीट कर रहे थे? सॉरी सर। हाँ, नेक्स्ट सर टू। फिर डेवेंचर ऐड करेंगे 7 लाख। 14% डिबेंचर। न्यू 7 अमाउंट लाख। 7 lakhs। हाँ, नेक्स्ट। सर नेक्स्ट वो कैंसिल हो जाएगा, कैपिटल रिडक्शन टेम्पररी अकाउंट है। फिर हाँ, 12% डेवेंचर 2 लाख 12% डिबेंचर 12%। 2 लाख कैंसल्ड। यस सर। एंड सेकंड डेवेंचर भी कैंसिल हो थ्री जाएगा लाख कैंसल 3 लाख। एंड ट्रेड एंड पेबल ट्रेड पेबल 1 लाख। 1 लाख कैंसल्ड। हाँ, to Y एंड is a temporary account, यस सर, and Y2 for 14% debenture 3 lakhs. 3 लाख से ऐड करेंगे। To capital reduction कुछ नहीं। Then capital reduction कुछ to नहीं। goodwill. Goodwill कितने से माइनस करूँ? गुडविल 20 लाख से पूरा कैंसिल हो जाएगा। एंड पी एंड एल 20 लाख से। P&L 20 lakhs प्लस हो जाएगा, मतलब जीरो बैलेंस। यस सर। And computer reduced by एंड कंप्यूटर्स 15 लाख। 15 lakhs। सो बोलो 10 नया लाख इक्विटी बचे। शेयर कैपिटल कितना हुआ?
सर 30 लाख प्लस 10 लाख 40 लाख। Which 10 lakh? ये तो ये प्लस सर वो कर 10 लाख। यस सर। माइनस भी किया ना 75 lakhs. यस सर। यस सर। तो ओनली 30 lakhs, no? सॉरी। यस सर। हाँ. डेबिट बैलेंस इन देन P&L जीरो. डेबिट बैलेंस जीरो एंड फिर डेवेंचर्स कैंसिल हो गए और 14% 10 लाख के हो जाएंगे डेवेंचर्स हाँ एंड जीरो। फिर हाँ. प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट बिल्डिंग सेम रहेगा एंड प्लांट 10 लाख का सेम रहेगा एंड कंप्यूटर्स 15 लाख का आ जाएगा सर। 15 लाख। 15 लाख से रिड्यूस हुआ है बेटा. यस सर। तो बचा कितना कंप्यूटर में? 10 लाख तो आप क्या कर रहे हो एंड फिर? गुडविल। सॉरी सर। कुछ तो अलग ही गुडविल जीरो। प्रोसेस है आपका बैलेंस शीट टैली करने का. आई डोंट थिंक कि आप मेरा टेक्निक फॉलो करते हो. 30 नहीं lakhs. सर आप ही का फॉलो। फिर ऐसा बैलेंस शीट कौन करता है? जीरो, 10 lakhs. ट्रेड पेबल में कितना बैलेंस बचा? सर ट्रेड पेबल में 2 लाख बचा। 30, 40, 42 lakhs. 42 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट 30 lakhs. सर 30 लाख। जीरो, 30 lakhs ना. यस सर। सर एंड 42 बैंक बैलेंस 12 lakhs. So our balance sheet is tallying at 42 लाख। 42 lakhs. Yes. Easy. यस सर। आज होमवर्क है आप लोगों को. ओके सर। ये सेम क्वेश्चन है क्या? देखो. This is similar to which question? All the existing equity share. सर फिफ्थ वाले I think illustration number फिफ्थ 5. वाले के जैसा लग रहा है ये। Illustration 5 exactly यस same सर। with double amount. I think 5 नंबर देखो. डबल अमाउंट है क्या? यस सर। तो दिस इज योर होमवर्क. सर ओके सर। कर लगे. यस सर। 11 number even I am not going to discuss it tomorrow. ओके सर। I will take some paper examination questions. Examination. ओके सर। 12 number बेटा. सर See ये भी any इजी लग रहा है। easy लग रहा है? यस Yes, सर। 12th also बेटा होमवर्क में जाने दो. ओके सर। Yes, 12th is also your homework. चलो, do 9 number here only. 9 number का एडजस्टमेंट. यस, एनी अदर स्टूडेंट बेटा? तनु जी थैंक यू. एंड तनु का मिस्टेक क्या किया आपने? Expenses on reconstruction is capital reduction to bank. Yes, सर हार्दिक. हाँ बेटा. जनरल वाइज जर्नल एंट्रीज में एक्स और वाई समझा नहीं था. यू पास्ट
बैलेंस शीट हाँ, बैलेंस शीट तो आपने बहुत बनाए तो वाहियात है। बनाया था। हाँ, बैलेंस शीट तो ओके आपने सर। मन में आया वैसे बना लिया था। ओके, सो एंट्री बाय एंट्री नेक्स्ट टाइम। यस सर। हाँ, चलो ओके सर। नंदा गोपाल, read this adjustment and tell me the entry. Good morning, sir. Good morning. Read this entry, adjustment. All of you read and tell me beta answer. I'm giving you 2 minutes. Parth Limited had laid down the following terms upon sanction of reconstruction First, plan by the first read board. it. Beta, first read it and then you just write it in your rough pages and then we will check it. Okay, sir. 9 number. I'm giving you 5 minutes. Yes, Write sir, I on want rough to read. pages. First read it, beta, Nanda. Afterward, means you Following. solve by your own. I will discuss it Okay, after sir. 5 minutes. Okay? Okay, okay, sir. Chalo, all of you beta solve this question fast. Yes, Nanda ji. Yes. Easy first entry. Sir. So equity share capital account debit 1 lakh. Correct? Yes, sir. To new equity share. How much? 60,000. To preference share capital 10% preference share capital 1/5 of their holding. Means 20,000. And to 8% debentures 40,000. 40,000. To, sir. Sir, equity share capital 10 lakhs, sir. See, this is the entry. Sorry, equity share capital 10 lakhs. Sorry, it's my mistake. 6 lakhs, 2 lakhs and 4 lakhs. Sir, preference share capital 1,20,000. 6 lakhs, 1/5, no? Sir, 1/5 of the new fully paid shares.
Oh, sorry, 1/5 of new ये. So 1,20,000. 6 lakhs का 1/5. Yes, sir. So I will write here 10 lakh into 1 lakh into 10 into 3 by 5. That is 6 lakhs. And 6 lakhs into 1 by 5. So 1,20,000. And to 8% debenture 40,000. So balancing figure to capital reduction. Easy or difficult? easy, sir. And then issue 1 lakh first debentures, bank account debit to 10% debentures. 10% first debenture 1 lakh. 1 lakh. And then last entry capital reduction account debit to goodwill 1,40,000. 40,000. To plant and machinery 50,000. 50,000. And to freehold property 50,000. return to and buy. See the difference, huh? IMP. Yes, sir. 2 means capital reduction में 50,000. And here in capital reduction, buy 50,000 means directly 50,000. Buy होगा तो directly that amount. Okay, sir. 2 and buy is IMP, correct? Yes, sir. So easy the question. Easy, sir. So balance capital reduction 2,40,000 credit and debit 2,40,000. So nothing to transfer to capital reserve. Yes, sir. So ये question easy था. Eight number. Eight number. ठीक है. 8 number you try it in homework. So tomorrow we will take this 8 number. Today I am leaving you 10 minutes early. As you are having homework, we discuss all questions. Whether past questions is updated beta on application. Past examination question नहीं दिए. Hello. Internal reconstruction past questions नहीं टाकलेस. Past examination questions नहीं upload किए. Internal reconstruction. Past questions आणि ब्रांच पण टाकून दे. हाँ लवकर टाकते पोरांना सॉल्व करायचे. इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के पेंडिंग है शायद से, तो वो डाल दो, आज बच्चे सॉल्व कर लेंगे. हाँ ठीक है बेटा. टुडे आई विल अपलोड दैट फाइल, otherwise you can solve from your 5-6 papers with 2020, 21, 22, 23. It will be easy for you. So do it these questions, okay, and finish it off. It's very simple chapter. Yes, Hardik, any closing remark beta? Yes, beta Preeti, बोलिए. डाउट है सर. सर हाँ हम हाँ इलस्ट्रेशन 3 और 8 में हमने देखा कि फेस वैल्यू से रिडक्शन हुआ है. सर वो कैसे पता करना है सर, मुझे समझ में नहीं आया अभी तक. एक कभी कभी क्या होता है कि assumption ले लेना, नीचे राइट डाउन नोट दिस इज चेंज इन दी वैल्यू. लाइक सर कुछ नहीं दिया है तो चेंज इन फेस वैल्यू है, हाँ बट नीचे assumption ले लेना. ओके सर ठीक है. ठीक है. क्या क्या होता है वो मैं कुछ तो बताऊंगा आपको, तो कभी कभी assumption बेस्ड नीचे लिख देना. ओके सर डन सर. Yes, first two questions also you have to do. It's very simple. No beta Anil ji, my questions budget and all will be discussed by your income tax faculty, and that budget I don't think we are paying very high tax, so middlemen के लिए they should think is over. And GST also now on rent and this reverse charge, this is very difficult for SSC, so nothing to comment on this. And you can see the share market will definitely give response. If it is bad, definitely your share market will go down, so you have to wait for that. Yes, और देखो एक है कि ओवरऑल बजट के बारे में आप अपडेटेड रहो, अच्छी बात है, बट नाउ योर एग्जाम फोकस मस्ट बी इम्पोर्टेंट बेटा. सो फोकस ऑन योर एग्जाम,
not on budget. Yes, 1 hour news, it's okay. Daily 30 minutes, 40 minutes. But now please do not get involved in those things unnecessary. Better you don't waste your time. Next, yes, beta Preeti. So internal reconstruction is simple or difficult? सर इजी है सर. Easy है. Amalgamation से भी easy or both are easy? सर both are easy. So now which chapter is difficult for you from a practical point of view? सर कुछ भी नहीं. All topics are simple Yes, sir. other than accounting standards? सर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी इजी है. नहीं नहीं नहीं, प्रैक्टिकल टॉपिक्स पे आपका होल्ड कौन से चैप्टर्स पे अभी कि यू विल गेट फुल मार्क्स? सर इसमें मुझे मिल ही जाएंगे. सारे चैप्टर्स में आ जाएंगे सर. Buyback easy, internal हाँ. reconstruction easy, amalgamation easy, Yes. consolidation is also easy, Yes, sir. and now we left with only branch accounts. So what So is from Tuesday we are starting with and cash flow, yes, and financial statement. I forgot that too. So financial statement and cash flows are also very simple chapters. Okay. So I think 40 to 60 marks का मैंने अच्छे से कवर ही कर लिया है. Accounting standards, it might happen that you forget some, or it हो सकता है कि you are not remembering all these accounting standards in detail. तो read your 100 pages book continuously. तो Yes. अकाउंट्स का डर मैंने निकाल दिया है आपका, वेरी इंपॉर्टेंट. तो यस, सो नाउ फ्रॉम Monday we are going to start with a fresh chapter. Tomorrow we will finish it off. तो मंडे को 2 क्लासेस रहेंगी क्या? एक ही रहेगा मॉर्निंग में मंडे को. ओके, टुमारो ऑल्सो वी हैव अ शेड्यूल एंड वेडनेसडे का शेड्यूल भी रहेगा. टुमारो ओनली, यस, डेली 2.5 hours but only in the morning time. So Wednesday you do not have any holiday. Okay. Okay, there is no weekly off now till Saturday. So we will complete it from Monday to Saturday. We will try to finish it off in 6 days. We will finish it off. Okay. Okay. So tomorrow you are having session. Yes, तो sir. it is not updated or updated. अजित सर सुन रहे हो क्या आप? अपडेट होने वाला है क्या आज? अजित सर is there? ठीक है. Tomorrow you have, though it is not updated, but you have a session. Yes, sir. ठीक है, चलो. So I will upload that schedule, past questions also. तो वो देख लीजिए and try to solve it. Today do only internal reconstruction. Okay. Yes, thank you beta. Thank you, sir. Yes beta. Bye. Thank you, sir. Thank you.